Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining us today. I can see many of students, they have already joined us today. So today we will talk about College Multihexa. ये कहाँ पे इसकी location है, where it's located, what are we offering in this college, और इसके कुछ plus points जो हैं वो हम आपके साथ share करेंगे. Today who is going to present? Miss Bhumika, who is basically Indian subcontinent, पूरी region को देखती हैं और पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया इटसेल्फ जो पूरा आता है. सो मिस भूमिका इज विद अस, जो कि पूरी मार्केटिंग और एडमिशंस की हेड हैं. सो बेसिकली वो हमें बताएंगी इसके बारे में. सो आई एम गोइंग टू हैंड ओवर द सेशन टू मिस भूमिका. शी विल कंटिन्यू द प्रेजेंटेशन. अगर आपको कोई इस दौरान कोई भी क्वेरी होती है, प्लीज फील फ्री टू आस्क. आपके जो राइट साइड पे जो है वो एक चैट बॉक्स है. यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, यू कैन रेज योर हैंड्स. सो यस, प्लीज कीप दिस session very interactive and feel free to ask the questions. Over to you, Bhumika. Please continue. Thank you. Thank you so much, Sana, and good evening to everyone from College Multihexa. We are going to present College Multihexa to all of you, and we will talk about the benefits that students can avail by studying with us at College Multihexa. On your control panel, there are several options that appear, one of which is the Q&A box for question and answers. So for any questions that you have related to the college, admission process, you can put it in the Q&A box. And if you have any technical issues, feel free to put it in the chat box. So please make sure that you put your questions in the Q&A box, and we will pick up your questions and answer them all one by one before winding up this webinar. So we'll take you quickly through the tour of College Multihexa. Okay, first things, the location. So Multihexa College is based in Quebec in Canada. Quebec is one of the largest province of Canada, and we are located in one of the largest city in the province known as Saguenay. So here is a map, quick map for you to look at. Saguenay is about 4.5 hours ahead of Montreal, and it is 3 times as big as Montreal is in terms of area. There are a lot of manufacturing centers in the city Saguenay, and students get a lot of options for their part-time jobs. Quebec is one of the most affordable province in Canada, be it in terms of living cost, be it in terms of the affordability of tuition fee of your colleges and universities. So Quebec is one of the most affordable province, and the PR opportunities for Quebec is also very good at the moment as compared to some of the other provinces. So moving on with the presentation to the college history. So Multihexa College was established in 1986, and it is almost a 35-year-old college today. In the past 35 years, we have been teaching IT to the students. Our main focus is to train IT professionals. So we want students to study with us, get the practical knowledge, and become IT professionals by the end of the program. So the picture in front of your screen that you're able to see, this is the college infrastructure. This is the building of College Multihexa. We work very closely with the IT companies so that we can help our students for their internships and placements. So we have 3 to 4 IT companies operating within the same building with us, and students can very easily apply for their internships as well as their placements within the same building as an option number 1. Apart from this, College Multihexa has more than 20 IT companies where we can help our students for internships and for their placements. 99% of these students who go to study to Canada, they want to have a job by the end of their program. So after studying, you would for sure want to find a job and work at that place, right? So this is something that College Multihexa helps you with. You don't have to worry about your placements. The college will take care of it. Moving on. Now we have a standard classroom size, 25 students per classroom, not more, so that we can have a good interaction between students and teacher in every class. We have very low cost of living and efficient transportation system, affordable housing options in the region. You don't have to spend a lot on your living cost, food, and transportation. It's a beautiful city, urban city, where you can enjoy a lot of activities, recreational activities around during summers and winters, of course. When we talk about the actual living cost, around $500 to $600 would be enough for you to cover your entire expense. This includes your accommodation, your housing, Wi-Fi bill, electricity bill, groceries,
food, and monthly bus pass for transportation. So the students can enjoy high quality of living at a very reasonable price. Moving on to the part-time jobs and the wage rate. So we have amazing part-time jobs in the region. You can also look it up online. There are several websites where you can find part-time jobs in Saguenay. The minimum wage rate offered to the students is $14 per hour, and it can go up to $21 per hour. So it depends what type of job you're choosing, and accordingly you will get a wage rate fixed for the same. I have added a screenshot from Indeed.com website where there are several jobs and salaries mentioned. One good thing that I would like to highlight over here is that at College Multihexa, we support the students for their part-time jobs. So you don't have to find jobs on your own. We will find the jobs for the students, and we will prepare your resume and CV and take you at our own transportation cost for interviews, so that you will have your part-time jobs within a week's or at max 2 weeks time, so that you can get started with your part-time work. Moving on to the programs. The first program that appears on your screen is AEC Programmer-Analyst. Now, in this particular program, the students can become website developer, mobile application developer, and database manager as well. This is an undergraduate diploma program for 2 years, and we offer 3 years of postgraduate work permit. So you study for 2 years and you have a work visa extension for 3 years. You can get a very good salary after the completion of this program of almost $42,500 on a beginner level. Second program that we have is in front of your screens. This is AEC Network Manager. Any student who is not interested in hardcore IT development, he or she can opt for Network Manager program, where you will have to take care of the big networks of an industry. This again is a 2 years diploma with 3 years of work permit, and you can become IT advisor and IT technician to work at. And we have almost $40,000 of a starting salary package on a beginner's level annually for the students working on the same profiles. Moving on to the admission requirements and fee structure and intakes. So we have 3 intakes in a year: January, May, and September. Right now, we are open for May 22 intake, and the last date to apply is 28th of February. After May intake, we will be straight away accepting applications for September intake. The application fee is waived off. We don't charge anything for processing your application fee at all. So you can send your application to us and we will issue the offer letter to you completely free of cost. The admission fees is just $11,800. This is actually your tuition fee annually, and this is the only fees that you have to pay. You don't have to pay anything else apart from 11,800 Canadian dollars. Then moving on to the requirements. So we require students to have a minimum of 50% overall and 50% in each of the subjects in their high school. And we also accept IELTS and PTE as English proficiency tests. So 6 bands overall with 5.5 in one module for IELTS, and 55 overall with no module less than 51 for PTE is what we are accepting at the moment at College Multihexa. We have a lot of local employment opportunities for the students, where you can apply to be an intern as well as a full-time employee to work in the IT. On your screen, you're able to see a lot of IT companies that are very close to the campus, and Quebec is the IT hub for Canada. We have about 1.4 million jobs in the coming 5 years, where the students have a lot of opportunities to grow and excel in their careers. Moving on to internship and class schedules. I know that students really appreciate small class schedules. So we have very small class schedule of 3 days of classes in a week and not more than that. So you will have to attend college for almost 2.5 to 3 days in a week, 4 to 5 hours of classes each day. Apart from this, there is a mandatory internship for 3 months towards the end of the program. So you will have to undergo the internship so that you can learn how to perform at an IT company when you are working there as a worker eventually. So since everybody learns how to work during their internship, this is what helps us in our placements. So we offer 86% placement at the moment from the campus itself, and you are highly likely to get a job if you choose to study with Multihexa. We ensure to deliver good quality education to the students, and we ensure to help the students with their internships and placements eventually. So as a college, Multihexa has been recognized by Microsoft and Cisco as well.
and we're quite proud of that. We have a lot of international students studying with us, and we are happy to welcome more from Pakistan as well. I would like to highlight our international student services. So we provide a lot of services completely free of cost. So we will provide the airport pickup facility to the students, support for accommodation and housing, support for internships and placements. Another thing that I would like to highlight is French classes for the international students. So since there are two languages spoken in Quebec, one is English and other is French, the government pays the students if you attend French classes and learn French language locally. So you will get almost $100 to $150 a week if you attend French classes, which will also help you in your PR points, and this will be an extra source of income. So you can make money by doing part-times as well as learning French classes. So we help you with the French class registration, and we also help you with any kind of paperwork and documentation related to your visa that you might need help with after reaching on campus, and even when you're transferring to your work permit after completing your studies with Multihexa. So right from the airport pickup until the time you have got a job and you've been placed, we ensure to support you at each and every step. So that's what we provide at Multihexa College. I would also like to highlight about the fact that Quebec offers a very good permanent residency option at the moment. You can definitely check out immigration policies of Quebec on the official website, which is quebecimmigration.com. And you will find that you are able to obtain your permanent residency in almost 2.5 years. So 2 years of studies and 6 months of work experience is what will make you eligible to apply for a permanent residency eventually. And we are quite quick in terms of processing your application. So you can apply to College Multihexa and obtain an offer letter almost within 48 hours after applying your application. At the moment, we are giving a scholarship of 2,000 Canadian dollars. So $11,800 is our current fees, and the offer is only eligible until we close May intake. So until 28th February, we are open for May intake, and you can avail a discount of 2,000 Canadian dollars. Again, the last day to apply is 20th of February, so we have almost 28 days left. And yeah, that's about it from my side. If you have any questions, I would be happy to answer. You can put your questions in the Q&A box, and we will pick your questions and answer them. Hi, Sana, are you there? Yes, yes. Is everyone more comfortable in Hindi? Should I speak Hindi? No, no worries. You can please continue, or this is perfectly fine. And let's take the questions. So, किसी का कोई भी सवाल है, please feel free to ask. Okay, there's one question in the box. I can see about the SDS category. Can students apply through SDS? जी बिल्कुल students SDS के through apply कर सकते हैं, and 6 overall 6 each अगर students का score है तो और भी अच्छी बात है, and we can for sure happily process that application. Any other question? I think इतने अच्छे से सेशन था कि सबको सभी कुछ जो है वो क्लियर हो गया. नॉर्मली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से जैसे बात होती है, so Bhumika, there is a very frequent questions normally students ask about the refund process. If anything, God forbid, happened, visa got refused. So what are the timings and how much will be the deduction from the fee? कितनी देर में लोग वापस जो है फी उनको मिल जाता है, थोड़ा सा इस पे आप गाइड कर दीजिए. बिल्कुल. सो अगर किसी स्टूडेंट का वीजा रिफ्यूज होता है और वो रिफंड के लिए अप्लाई करता है, हमारा रिफंड का प्रोसेसिंग टाइम है 7 से 8 वर्किंग वीक्स. सो 7 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर हम स्टूडेंट का जो भी पेमेंट रहता है, ट्यूशन फी, वो रिफंड कर देते हैं. जो डिडक्शंस रहता है, दैट इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, जो कि 250 Canadian dollars है. So 250 Canadian dollars minus your tuition fees
11,800 है अगर आप मेन टेक के लिए अप्लाई करते हैं तो. So that would be the only deduction. इसके अलावा everything would be refunded back to you 7 से 8 हफ्ते के अंदर. अच्छा, एक और क्वेश्चन है. बिलाल असलम इज आस्किंग वेदर एंड कंफर्टेबल लिविंग इन क्यूबेक. तो आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि क्यूबेक में कितना कंफर्टेबल है. और मोस्टली जो मैं फॉर एग्जांपल जब जैसे मैं भी सेमिनार्स में जाती हूँ, बच्चे मुझे मिलते हैं तो दे ऑलवेज आस्क, अरे ये तो फ्रेंच है वहां पर. तो इस पे थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट कर दें कि एशियन लोग जो है वो कैसे कंफर्टेबल, कितना कंफर्टेबल रहते हैं वहां पे. बिल्कुल सना. तो सबसे पहले मैं वेदर के बारे में बात करना चाहूंगी. तो कनाडा, पहली बात है कि कनाडा इज ऑल अबाउट कोल्ड. इट्स ऑल अबाउट कोल्ड, विंटर, स्नो एंड एवरीथिंग. तो आप स्नो से तो नहीं बच सकते और आप ठंडी से भी नहीं बच सकते. बट यस, इन योर बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, हाउस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यू हैव हीटर्स. आप जिस टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं या बाहर रोड पर जाते हैं उतने टाइम के लिए ठंडी होती है या बर्फ होती है. एंड यस, द टेम्परेचर फॉल्स अप टू -20. बट इंडियन कम्युनिटी के बहुत स्टूडेंट्स वहां पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. 1.56 लाख पीपल का पॉपुलेशन है सिटी के अंदर. सभी तरीके की सर्विसेज फंक्शनिंग में रहती है. तो ऐसा कोई खास चैलेंज नहीं है. सारी फैसिलिटीज एंड सर्विसेज उसी के अकॉर्डिंग बिल्ड की गई हैं कि सब लोग वेदर को कोप अप कर सके. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा, आपने मुझसे एक दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था सना? आई ऑलमोस्ट स्किप्ड माय फ्रेंच के माइंड. बारे में पूछा था. फ्रेंच, राइट. फ्रेंच, ठीक है. तो यस, क्यूबेक के अंदर दोनों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इंग्लिश भी एंड फ्रेंच भी. और जहां तक बात है फ्रेंच की, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने के लिए. एज अ स्टूडेंट मैंडेटरी नहीं है कि आप फ्रेंच पढ़ें, बहुत जरूरी है कि पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है. लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो उसके फायदे बहुत है. सबसे पहली बात तो आपको फ्रेंच पढ़ने का सामने से गवर्नमेंट पे करती है, पैसा देती है. सो आपको $100 से $150 हफ्ते का मिल रहा है. मतलब महीने का $500 से $600 आपको सिर्फ फ्रेंच पढ़ने के लिए मिल रहा है. आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं भी करनी तो भी काम चल जाएगा. तो ये एक पहला बेनिफिट है. दूसरा, अगर आप फ्रेंच पढ़ते हैं और आप इंटरमीडिएट लेवल पे फ्रेंच का पेपर क्लियर करते हैं, A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 लेवल्स होते हैं, तो आप B1, B2 पे क्लियर करते हैं तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पॉइंट्स बढ़ जाते हैं क्यूबेक के अंदर. तो आप इजीली PR अप्लाई कर सकते हैं. और फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है, तो इस कारण से आप एक बाइलिंगुअल पर्सन भी कहलाते हैं. और अब देखिए, हिंदी तो हमारे यहाँ पर ही चलती है, बट अगर हम ग्लोबली देखें तो फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, ये सब लैंग्वेजेस बहुत काम आती हैं. तो आपकी रेज्यूमे पे जब आप हाईलाइट करते हैं कि आप फ्रेंच भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, तो आपके लिए और ऑप्शंस बढ़ जाते हैं ग्लोबली काम करने के लिए. सो ये सब बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसके लिए मैं उनको हमेशा रेकमेंड करूंगी कि वो फ्रेंच क्लासेस के लिए रजिस्टर करें और एक नई लैंग्वेज सीखें. Thank you so much, Bhumika. Yes, it's in my experience as well. I used to work in Dubai, and my daughter was studying over there. So I've seen from the grade 5th onward, French is compulsory because they wanted to, learn French. So ये आप सबके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप वहाँ जाएं और free of cost जो है वो classes ले लें. We have received another question in the meanwhile. बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड है थ्रू SDS. सो भूमिका, व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूबेक, सो बेसिकली कनाडा के बहुत सारे प्रोविंसेस हैं. सो क्यूबेक का अगर हम बात करते हैं, PR से भी रिलेटेड बात करते हैं, तो ये इट कम्स अंडर वेरी सेपरेट कैटेगरी. तो क्या इसके ऊपर लिविंग कॉस्ट जो GIC की 10,000 कैनेडियन डॉलर्स की है, क्या यहाँ पे सेम ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है? GIC स्टैंडर्ड है सना, सेम है. 10,200 का आपको GIC पे करना रहता है, जो आपको ऑब्वियसली इट इज योर मनी और वापस आपको मिल जाता है मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट के अंदर. तो बीट क्यूबेक और एनी अदर प्रोविंस इन कनाडा, वो स्टैंडर्ड सेम रहता है. Okay, fair enough. Any other question? अगर किसी का कोई भी सवाल है, प्लीज फील फ्री टू आस्क. इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और जितना इनसे जो है वो हम पूछ लें वो उतना अच्छा है हम लोगों के लिए. वैसे तो शी इज डायरेक्ट, I mean handling university and all. So कोई ऐसा स्टूडेंट्स के फेवर में कोई ऐसा प्रोग्राम इस वक्त PR के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर चल रहा है क्यूबेक में जो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करे कि हमें वहां जाना है और हमने लेटर ऑन जो है वहां पर एडजस्ट होना है? सो इसको अगर आप एक जुमले में, एक सेंटेंस में अगर आप बता दें. बिल्कुल सना. सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगी कि कनाडा का IT हब है क्यूबेक.
हमारे इंडिया में आईटी हब है बैंगलोर, उसी तरीके से कनाडा का आईटी हब है क्यूबेक। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ओरेकल सभी के हेडक्वार्टर्स अगर हम देखें तो क्यूबेक में बेस्ड है। और मल्टीहेक्सा में हम लोग 20 से भी ज्यादा आईटी कंपनीज के साथ एसोसिएशन में काम करते हैं ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिला सके। स्ट्रगल स्टूडेंट को वो रहता है, देखिए एडमिशन ले लिया, कॉलेज में पढ़ाई पूरी कर ली, स्ट्रगल उसके बाद शुरू होता है कि अब जॉब कहाँ करनी है, जॉब कैसे ढूंढे, काम नहीं करना आता, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हमने अपने प्रोग्राम को डिजाइन इस तरीके से किया है कि बच्चा इंटर्नशिप के दौरान काम सीख लेता है कि काम किस तरीके से करना है, और उसी के बेसिस पे उन्हें कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट्स भी मिलती हैं। सो जॉब गारंटी यहाँ पर सिक्योर हो जाती है, स्टूडेंट का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, स्टूडेंट का करियर सिक्योर हो जाता है, और उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद 4, 5, 6 महीने के बाद वो अपनी जॉब स्विच कर सकता है, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट में भी काम कर सकता है अगर स्टूडेंट एक अच्छा स्किल वाला स्टूडेंट है तो। और अभी हाल ही में क्यूबेक गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा फंड्स इन्वेस्ट किए हैं आईटी सेक्टर के अंदर, और बहुत सी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को इनवाइट किया है क्यूबेक के अंदर अपने हेडक्वार्टर सेटअप करने के लिए। साथ ही में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को भी गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है कि आप आईटी के अंदर और फंड्स इन्वेस्ट कीजिए और स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा पढ़ाइए ताकि हम और अच्छा आईटी हब यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सके। सो द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग अ लॉट, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड फॉर श्योर प्लेसमेंट्स हमारे कॉलेज की तरफ से बहुत अच्छे मिलेंगे स्टूडेंट्स को। नाइस नाइस। हमारे पास एक और सवाल आया है, टोटल कॉस्ट ऑफ एमबीए और एचआर। अनफॉर्चुनेटली एमबीए हम लोग कॉलेज मल्टीहेक्सा में ऑफर नहीं कर रहे। द प्रोग्राम्स दैट वी हैव वो बेसिकली इट्स अ सर्टिफिकेशन, राइट? सो जो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने अंडरग्रेड अभी करना है, राइट भूमिका, अंडरग्रेड जिनके पास डिग्री है वो भी जा सकते हैं, और जिन्होंने भी अंडरग्रेड करना है, थोड़ा सा मुझे करेक्ट कर दें यहाँ पे। बिल्कुल, जिन स्टूडेंट्स ने अंडर ग्रेजुएशन करना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं हाई स्कूल के बाद, और अगर किसी स्टूडेंट ने हाई स्कूल प्लस डिप्लोमा प्रोग्राम पढ़ा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। खासतौर से अगर किसी ने आईटी की फील्ड में पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी स्टूडेंट के पास रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ओके और इसके बाद हमारी जो प्रोग्रेशन है, लेट्स सपोज वी हैव डन दिस लाइक टू इयर्स का हमारा है ना प्रोग्राम ये वाला। सो हमने ये 2 इयर्स का कर लिया, तो हमारा फ्यूचर में हमारी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है वेयर वी कैन जस्ट लाइक हम एडमिशन ले लें फर्दर प्रोग्रेशन? बिल्कुल सना, आप पूरे कनाडा में किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आवर कोर्सेज आर कंप्लीटली ट्रांसफरेबल, क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे। सिर्फ इतनी सी चीज हमें देखनी पड़ती है कि जो कोर्सेज हैं वो सिमिलर होने चाहिए। सो बस बशर्ते कोर्सेज सिमिलर हो हम क्रेडिट्स ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नाइस नाइस। ठीक है जी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है हमारा अप्लाई करने का। प्लीज कांटेक्ट विद मिस्टर बासित मुस्तफा के साथ, आप लोग जो है वो इनके साथ कांटेक्ट करें इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन कनाडा क्यूबेक, विच इज द मोस्ट फेवरेबल। आजकल के टाइम पे जो है ना ये बहुत जबरदस्त जा रहा है। क्यूबेक की बहुत अच्छी बात ये है कि दिस इज द ओनली प्रोविंस जहां पर हमें जो है ना वो प्रोविंशियल जो है वो चाहिए होता है, CAQ चाहिए होता है, यानी परमिशन चाहिए होती है वहां पे आने के लिए, और किसी प्रोविंस में नहीं चाहिए होती है। सो व्हेन यू हैव अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कि यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया एडमिशन के लिए, एंड व्हेन यू हैव CAQ, a letter from a province that we have accepted you as a student, so please come and join us. तो हमारे पाकिस्तान में ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पता नहीं हमारा वीजा रिफ्यूज ना हो जाए और ये वो, तो ये दो चीजें तो वहीं पे ही एलिमिनेट हो जाती हैं। प्लस द प्रोग्राम दैट वी आर ऑफरिंग, उस प्रोग्राम की इतनी वर्थ है। अगर आप उसका कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे तो यू विल सी इट्स अ वेरी 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 यूनिक प्रोग्राम, प्लस इट्स लोकेशन। जो चीजें हम लोग SOP में लिखते हैं ना कि व्हाई वी हैव चूज दिस प्रोग्राम, लाइक, तो हम उस प्रोग्राम को किस तरह से नरेट कर सकते हैं, हमने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, हम अपने SOP में लिख सकते हैं बिकॉज द लोकेशन इज बेस्ट। इसके इर्द गिर्द सारा IT हब है, or we wanted to get experience, internship, we wanted to see real experience from the international university, international organizations। तो आप ये चीजें मेंशन कर सकते हैं, आई एम श्योर इंशाल्लाह आपका वीजा कभी भी रिफ्यूज नहीं होगा। और अगर फिर भी अगर हम मार्जिन रखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर रिफ्यूज हो गया है तो यू विल गेट रिफंड विद इन 7 weeks मैक्सिमम विद डिडक्शन ऑफ 250 CAD, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं। मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं पिक कर रही हूँ, एंड देन डेफिनेटली वी विल नॉट होल्ड यू एनी मोर। लास्ट क्वेश्चन है, बीकॉम IT 2 years program, MHR 2 years into 2012, 8 years experience, can I take admission?
सो भूमिका, मेरे पास ये सवाल बहुत आता है पाकिस्तान से कि 2 इयर्स का बैचलर्स, किसी टाइम पे 2 इयर्स का बैचलर्स होता था, बट नाउ इट्स नो मोर इन पाकिस्तान. फिर इन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है. सो कैन ही टेक द एडमिशन इन दिस सर्टिफिकेशन? इज इट पॉसिबल? नो, इट वोंट बी पॉसिबल. पहला कारण है सना कि स्टूडेंट रेलेवेंट नहीं है, उसने रेलेवेंट फील्ड में पढ़ाई नहीं की, सॉरी काम नहीं किया है. और क्योंकि वो हमारा काउंट ही नहीं होगा रेलेवेंट ना होने के कारण से, तो गैप स्टडी का बहुत ज्यादा बन चुका है. तो उस केस में हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. अदर देन गैप, आई मस्ट से दैट कि आप ना थोड़ा सा ओवर क्वालिफाइड, बिकॉज आपने मास्टर्स किया हुआ है. तो मास्टर्स के बाद अंडरग्रेड वाली लेवल क्वालिफिकेशन पे जाना, तो वो फिर जब हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान से वीजास क्यों रिफ्यूज हो जाते हैं, तो वो फिर मोस्टली इस तरह के केसेस में होते हैं जहाँ पे कोई ऐसा सेंस नहीं बन रहा होता है. सो यस, आप जो है वो आप पहले आइल्स कर लीजिए एंड देन कॉन्टैक्ट मिस्टर बासित और मुश्तबा. दे विल डेफिनेटली गाइड यू फॉर अदर कैनेडियन यूनिवर्सिटीज. वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. जी ठीक है जनाब. आई थिंक एक और उन्होंने क्वेश्चन जो है वो लिखा है, मैक्सिमम गैप अलाउड आफ्टर इंटरमीडिएट. सो भूमिका, कितना गैप हो तो हम ले लेते हैं? 5 years. 5 इयर्स. हाँ ठीक है, 5 इयर्स का हम लोग ले लेते हैं. ठीक हो गया. सो अगर किसी के पास कोई बहुत ही अगर 5 इयर्स का भी गैप है, आर्ट्स बहुत अच्छा है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, या 2 इयर्स का बैचलर्स भी किया हुआ है, वी आर हैप्पी टू गिव यू एडमिशंस. हमारी मेन टेक भी है, उसके बाद सितंबर इनटेक भी है. मेन टेक तो बिल्कुल फिनिश होने वाली है. सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, प्लीज फील फ्री टू कोऑर्डिनेट विद द टीम. ठीक है जी. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. Thank you so much, Sana. Thank you everyone for joining in. Bye bye. बाय.